Today we will do the topic balancing of redox reaction by oxidation number method. There are two methods of balancing. One is ion electron method and the second is oxidation number method. आप balancing किसी भी method से कीजिए, the result comes out to be same. With a little difference that this oxidation number method is quite you can say smaller method and ion electron method is quite bigger method. That is the only difference. But in both the cases, the result comes out to be same. Now first we will see that what are the main steps of this. First you have to write the oxidation state of all the species, all the atoms and ions. Then divide into oxidation and reduction. Later on you have to divide. Then you have to balance the increase and decrease in oxidation state. You know in oxidation what happens? Oxidation state increases. And in reduction oxidation state decreases. So you have to equalize them. The increase must be equal to decrease. That we will discuss how can we do it now. After that आपको दोनों halves को add करना है. Then balance the charge. If acidic medium H positive, basic medium H negative. Then balance oxygen by adding water. जिस साइड में ऑक्सीजन कम है वहां पर you have to add same number of water molecules. Then balance hydrogen. Hydrogen के लिए remember if the medium is acidic add H positive ions. If the medium is basic then you have to add water molecules. And on the opposite side, you have to add same number of OH negative ions. And in the last, this is you can say leaf. In the last, you can say you will check your balancing whether it is correct or not. So I think we will start our balancing. There are total 1, 2, 3. You can note down the numbers. This will be the 4, this will be the 5, and this will be the 6 steps now. Now step number 4 and step number 6. These are the steps which you have to perform according to the medium. Clear? The medium given to us is acidic medium. तो इस medium में आपको 4 और 6 step पे थोड़ा ध्यान देना है. Now we'll start with the step number 1. Write oxidation state of all. So we'll write the state of oxygen is -2. Chromium beta ये D block element है. For D block metal we have to find out the state. Let it be X. For true chromium 2X. ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 इक्वल टू -2. सो x comes out to be +6 means the state of chromium is +6. Next, SO3 2 negative. The state of oxygen is -2. Sulfur x oxygen -2 into 3 -6 equal to -2. So x comes out to be +4. The state of sulfur is +4. Here the state of chromium is +3 and beta here oxygen is -2. Sulfur calculate x. Oxygen 4 into -2 -8 equal to -2 comes out to be +6. The state of sulfur is +6. So my dear students, I have already written the state of all these elements. And if you found any difficulty, then you can see my previous lecture in which we have discussed in detail how to find out the oxidation state. Because today's lecture is the balancing of redox reaction. और इससे पहले वो आपको जरूर आना चाहिए. Just note now. So step number 1, write oxidation state of all. Now we have to divide into two parts, oxidation and reduction. So simply I write oxidation and here I write reduction. Oxidation means state increase. +4 से +6. So I will write SO3 2 negative to SO4 2 negative और decrease beta +6 से +3. So Cr2O7 2 negative to Cr+3. Note down their states. Here it is +4. Here it is +6, here it is +6, and here it is +3. So I have divided into oxidation and reduction half, and in this step we will add one more thing beta, that you can write balance atoms whose oxidation state changes. Clear? This we will do in step number 2. अब बेटा देखिए स्टेट किसकी चेंज है. सल्फर सल्फर इक्वल क्रोमियम क्रोमियम मेक इट 2. Step number 2 is complete. Now the step number 3, that is the main part of this
बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। सो जस्ट सी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेटा +4 से +6 कितने का इंक्रीज है 2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 डिक्रीज इज ऑफ 3। और टोटल चेक करना है, ये एक एलिमेंट का डिक्रीज है, दो में कितना हो जाएगा बेटा 3 into 2 comes out to be total decrease is of 6. So we have written increase and decrease in oxidation state. Equalize कैसे करें? How can I equalize? For equalize there is one of the best methods, cross multiply. So what will I do beta? I simply cross multiply this 2 into 3. So 2 3s are 6. So on cross multiplication this becomes now, if you multiply it with 3, this will be 3SO3 2 negative to 3SO4 2 negative, and here this will be as it is Cr2O7 2 negative to twice Cr plus 3. So we have increased equalized the increase and decrease. Now add the two half, दोनों हाफ को दोबारा कंबाइन करना है, तो ये सारा मिटा के हम अब इसको दोबारा से कंबाइन करते हैं। एंड ऑन कॉम्बिनेशन दिस कम्स आउट टू बी, इसको कंबाइन कीजिए, इनको और इनको ऐड कीजिए, यू विल गेट 3SO3 2 negative plus Cr2O7 2 negative giving you thrice SO4 2 negative plus twice Cr plus 3. So this is the main step. एक्चुअली बेटा क्या है कि मैंने फॉर द शेक ऑफ कन्वेंस के आपको समझ में आ जाए, मैंने इसको दो में डिवाइड करा दिया, अदरवाइज ये एक था रफ वर्क। पहला स्टेप एक्चुअली में यही बनता है कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है, तो मैंने एक स्टेप बढ़ाया ताकि प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2। नाउ जो भी हो गया 2 और 3 को हम एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अलग अलग करोगे तो आपकी गलती या मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे। अब देखिए वही ट्रेडिशनल मेथड है, बैलेंस द चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए पहले देखते हैं 3 2 6 minus 6 minus 2 equal to 3 2 6 minus 6 and 3 2 6 plus 6. So minus 8 equal to 0. So I have to add 8H positive. And we know that in acidic medium for charge balancing in acidic medium we use H positive ion, and these are added where there is less charge. Now see out which is less, 0 or minus 8. Minus 8 is, so this is added toward left hand side. So 8H positive हम left side में add करेंगे. I'll rub out this 8H positive plus 3SO3 2 negative plus Cr2O7 2 negative thrice SO4 2 negative plus twice Cr plus 3. After that I have to add oxygen, and for oxygen beta I have to add water molecules. So oxygen, let's count. 3 3s are 9 oxygen plus 7 oxygen. On this side 4 3s are 12 oxygen. So 9 and 7 16 oxygen, 12 oxygen. Difference is of 4 oxygen. So 4 oxygen right side में कम है, तो वहां पर we will add 4 water molecules. So this will be now 8H positive, thrice SO3 2 negative, Cr2O7 2 negative, thrice SO4 2 negative, twice Cr plus 3 plus 4 water molecules. Understand? And the last step you have to check हाइड्रोजन और बैलेंस द हाइड्रोजन। फिर से मैं कह रहा हूँ इस स्टेप की जरूरत बहुत कम पड़ती है। सो सी 8 हाइड्रोजन एंड 4 2s are 8. In the last we have to check whether balancing is correct or not. So charge check कीजिए बेटा, लेफ्ट में चार्ज +8, 3 2s are -6, -2 equal to 3 2s are -6, 3 2s are
plus 6. So I think this will be plus 8 minus 8 equal to 0. So 0 equal to 0. So charge on left hand side is equal to charge on right hand side. So this beta we have done the first balancing, that is in acidic medium, according to which method? Oxidation number method. Now we will do one reaction in basic medium also. In place of acidic medium, we will do the reaction now in basic medium. And the reaction that I will use, MnO4 negative plus I negative gives you MnO2 plus I2. Okay. So again beta we have to apply same steps. Start करते हैं. First step, write oxidation state of form. So beta just see out. The state of oxygen is -2. Mn is a B block element. इसकी state हमें calculate करनी पड़ेगी. So let the state be x. Oxygen 2 into 4 minus 8 equal to -1. So x will be +7. The state of Mn is +7. I negative, the state is -1. Same in MnO2, the state of oxygen is -2. Mn I have to calculate x. 2 into -2 minus 4 equal to 0. X equal to +4 and I2 0. So this we have find out the state of all the elements. Now what we have to do, just see out. We have to simply divide into oxidation and reduction of and balance that and use oxidation state changes. Just see out. So just see out, I write oxidation, I write reduction. So oxidation means increase. So increase is -1 to 0. This will be the increase. So I will write I negative to I2, and here the state is -1 and here the state is 0. Okay. चलिए. Decrease +7 से +4. So I will write MnO4 negative से बेटा MnO2. In MnO4 negative the state is +7, in MnO2 the state is +4. हो गया. चलिए अब क्या करना है, उन एटम को बैलेंस करना है जिनकी स्टेट चेंज है. तो I2 2I, ये 2 लगा दिया यहाँ पे, ये ऑलरेडी बैलेंस है. मेन काम क्या करना है, डिवाइड. नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों को दोबारा से ऐड करना है. तो जस्ट सी आउट, इंक्रीज फाइंड आउट करते हैं कितने का है बेटा. -1 से 0, 1 का डिफरेंस है और 2 एटम्स है, तो इंक्रीज कितना हो गया 2 का. +7 और +4 कितने का डिफरेंस, फिर से देखिए, +7 एंड +4 द डिफरेंस इज ऑफ 3. सो यहाँ पे जो डिक्रीज है वो किसका है 3. हाउ कैन आई इक्वलाइज, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. तो इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल आई गेट, 3 2 6I नेगेटिव. ठीक है बेटा. और राइट साइड में क्या जाएगा 3I2. एम आई क्लियर. और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, और राइट में बेटा ट्वाइस MnO2. आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, दोनों को यही मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं. मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो व्हाट इट बी, 6I नेगेटिव, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गिविंग यू 3I2. और बेटा इसको 2 से करेंगे देन इट विल बी ट्वाइस MnO4 नेगेटिव से ट्वाइस MnO2. एक बार बाकी रब कर देते हैं, नो नीड ऑफ दिस. अब इसको ऐड कीजिए. After adding, what will you get? 6I negative plus twice MnO4 negative, giving you 3I2 plus twice MnO2. This is the equation. So this way you can do it now. Confuse होने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट लिख सको तो डायरेक्ट लिख लेना, अदरवाइज दोनों को ऐड करके जो है वो लिख लेना. इट ऑल डिपेंड्स ऑन जैसे आपको अच्छा लगे. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट, अब हमारे मेन स्टेप हो चुके हैं. Now balance the charge by adding. Medium is now basic medium. So for the basic medium, we use OH negative to balance the charge, and this OH negative is added to the side where there is more charge. ये ध्यान रखिएगा. तो चलिए चेक करते हैं चार्ज कितना है. 6 minus minus 6, this will be minus 2, 0. So minus 8 equal to 0. So we have to add 8 OH negative. But on which side? जहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा होता है बेटा, माइनस 8 या 0? 0 will be more. So on the right hand side I will add 8 OH negative. On which side? Right hand side. The equation becomes 6I negative twice MnO4 negative 3I2 twice MnO2 plus 8 OH negative. You can see charge is already balanced. 6 minus 2 minus minus 8 and this is 8. After this oxygen calculate करते हैं. Oxygen 4 2s are 8 oxygen. On this side 2 2s are 4 oxygen plus 8 oxygen. So 8 oxygen on this side 8 and 4 12 oxygen. फिर से देखिए 4 2s are 8 oxygen. Right hand side 2 2s are 4 oxygen and 8 oxygen. So 8 and 4 12 oxygen, here 8 oxygen. So यहाँ पे आपके कितने ऑक्सीजन कम है? 4. 4 ऑक्सीजन आर लेस. सो यहाँ पे आप 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. 4H2 6I negative twice MnO4 negative giving you 3I2 twice MnO2 8 OH negative. Am I clear? Oxygen is balanced. Now in the last hydrogen, just check करते हैं. So 4 2s are 8 hydrogen and 8. This step no need to do it. Now in the last I have to check whether my balancing is correct or not. So for this, your charge on left hand side must be equal to charge on the right hand side. तो check करते हैं बेटा लेफ्ट में कितना चार्ज है. 6 into minus 1 minus 6, 2 into minus 1 minus 2. राइट साइड में न्यूट्रल न्यूट्रल. 8 into minus 1 minus 8. So minus 8 equal to minus 8. It means charge on both the side are equal. So this is all about we have done, that is balancing of redoxidation by oxidation number method. In both the medium we have done acidic medium and basic medium. So that's all.